In the name of Allah, the Merciful and Gracious. Good morning, students. The topic under discussion is our country in the world. I have explained you some passages of the text in my previous lectures. At first, we'll complete objective of that part and then we'll move forward for further reading. Students, source question is important part of our assessment. That's why I have prepared some for you. I have already explained all the maps given in this chapter. If you still have any confusion, you can watch past videos on YouTube channel of DMC Medina Town campus. I'll provide you PDF of these questions so that you may take prints and complete your notes. In case you don't have printer, you can copy all the questions in your register. Answer key is also given in the last slides of the lecture. So let's start from map number 1. Location of Saudi Arabia. Before starting map number 1, we need to know about the exact location of Saudi Arabia. For that, I have downloaded this map. In this map, you can clearly see 3 continents. One is Asia, Europe and Africa. This red color shows Saudi Arabia. You can see that Saudi Arabia is part of continent of Asia. This map shows continent of Asia, Africa and Europe. Let's see, this is Asia and this is Africa and this one is Europe. Clear? All these Islamic countries which are colored green are called Islamic bloc. These Islamic countries are called Islamic bloc. Here are also some Islamic countries. So Pakistan is located over here and Pakistan creates a link between South Asian countries like Maldives, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan. Pakistan creates a link between these countries. Let's see its questions. Observe the map and answer the following questions. Which continents are shown in the map above? You will write here the names of continents which you have seen in the map. Question number 2. What is significance of the location of Pakistan? I have told you that Pakistan creates a link between Islamic bloc and South Asian countries. Question number 3 is, what does location of Saudi Arabia indicate about the spread of Islam? I have already discussed it in my previous lecture. Let's repeat it once again. This is the map and here Saudi Arabia is located over here. Here is Saudi Arabia. Saudi Arabia is a center of Islam and you can see that maximum Islamic countries are near or around Saudi Arabia. So we can answer the question this way, that what does location of Saudi Arabia indicate about the spread of Islam? जो सऊदी अरेबिया की लोकेशन है वो हमें इस्लाम के स्प्रेड के बारे में क्या बताती है? हमें उस मैप को देख के क्या पता चलता है कि सऊदी अरेबिया का असर कैसा हुआ इस्लाम के स्प्रेड पे? कि आप देख सकते हैं कि इस्लामिक ब्लॉक में जो सारा इस्लामिक ब्लॉक है वो सऊदी अरेबिया के इर्द गिर्द है
तो इट मीन्स कि इस्लाम का सेंटर, इस्लाम का मरकज़ जो था वो सऊदी अरेबिया था, और वहाँ से इस्लाम बाहर की तरफ दूसरे जो नियरेस्ट कंट्रीज़ थे उनमें स्प्रेड हुआ. So this is how Saudi Arabia affected the spread of Islam. Next question is, in which continent is Saudi Arabia located? I have shown you a map. उस मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया is located in the continent of Asia. Next map shows neighboring countries of Pakistan. You can see here India, Afghanistan, Iran. This is China and the Arabian Sea. Its source question is based on the question related to neighboring countries. Question number 1. What does the map represent? The map represents neighboring countries of Pakistan. क्वेश्चन नंबर 1 में है कि मैप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये मैप किस चीज़ के बारे में है. तो दिस मैप रिप्रेजेंट्स द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान. क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच कंट्री लाइज टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा कंट्री है? लेट्स सी फ्रॉम द मैप. दिस साइड इज ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, सो इंडिया लाइज to the east of Pakistan. Question number 3 is, name the direction to which China is located. You know China is located on the upper side of Pakistan. So top side of Pakistan is called northern side. So China is located, China पाकिस्तान की नॉर्थ में वाक़या है. Question number 4, where is Arabian Sea located? Arabian Sea is located in the south of Pakistan. Next map shows South Asian countries. South Asian countries are Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives and Bangladesh. These are South Asian countries. So let's see its questions. Study the map and fill in the answer sheet. What is the question number 1? What is the group of countries shown in the map called? इस मैप के अंदर जितने कंट्रीज शो हो रहे हैं, इन कंट्रीज़ को के ग्रुप को क्या कहते हैं? आपको मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था. सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, साउथ एशियन कंट्रीज़ और मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ थे वो कौन से थे. तो इस मैप के अंदर आपको साउथ एशियन कंट्रीज़ पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं वो शो होते हैं. सो इट्स आंसर वुड बी the group of countries shown in the map is called South Asian countries. Question number 2. Which country consists of about 1200 islands? Let's read the map. You can see that Maldives is in the form of dots. These dots in fact represent represents islands of Maldives. So Maldives is a country which consists of almost 1200 islands. Which organization is formed by these countries? ये मैंने आपको बताया था कि सार्क जो थी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनाई गई है, इन कंट्रीज़ ने मिलकर बनाई है और ये इन कंट्रीज़ के जो वेलफेयर है उसके लिए बनाई गई थी. Question number 4. When does it flood in Bangladesh? बांग्लादेश में कब फ्लड आते हैं?
तो बांग्लादेश में जो लेट समर, या आपकी टेक्स्ट में भी मेंशन है कि लेट समर में जब स्टॉर्म्स कोस्ट लाइन को हिट करते हैं तो लो लाइंग एरियाज़ में फ्लड्स आते हैं और इससे बांग्लादेश का बहुत नुकसान होता है। Next is map number 4. This map shows height of landforms above sea level, के डेजर्ट की हाइट कितनी है, माउंटेन्स की हाइट कितनी है, प्लेटू कितने हाई हैं और जो प्लेन्स हैं वो कितने हाई हैं सी लेवल से। इस मैप में वो हमें बताया गया है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। डिफाइन अ रिलीफ मैप। रिलीफ मैप क्या होता है, आप यू वेरी वेल नो अबाउट इट। रिलीफ मैप शोज अस rivers, lakes, and height of land above sea level. Why is question number 2, why is the land below 300 meters colored green? मैप में जो मेजरमेंट्स दी हुई हैं उसमें 300 मीटर्स तक जो से नीचे तक जो लैंड है उसको ग्रीन कलर किया गया है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ग्रीन कलर आपको पता है ग्रीनरी से एसोसिएट किया जाता है और ये फर्टिलिटी को शो करता है कि ये फर्टाइल एरिया है, फर्टाइल लैंड जो है उसको ग्रीन शेड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द ग्रीन डॉटेड एरिया रिप्रेजेंट इन द मैप? मैप में आप देख सकते हैं कि ग्रीन डॉटेड एरियाज़ हैं। ये देखिए, आपको मैं थोड़ा सर्कल करके बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैप के अंदर ग्रीन एरिया है बट इट्स डॉटेड। इसका मतलब ये है कि इसकी हाइट तो बिलो 300 मीटर्स है लेकिन ये फर्टाइल नहीं है, यहाँ पर डेजर्ट्स हैं, इसलिए इसको डॉटेड बना दिया गया है। और भी डिफरेंट जगहों पे आप देख सकते हैं ग्रीन एरियाज डॉटेड हैं। ये इधर भी डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये इसलिए डॉटेड है कि इट शोज़, इट रिप्रेजेंट्स डेजर्ट्स। So dotted green area represents desert in the map. What is the maximum land height shown in the map? Maximum land height क्या शो की गई है मैप में? It's about 9,000 meters. Next map shows different landforms along the borders of the country. जो पाकिस्तान वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो कौन से लैंड फॉर्म्स जो हैं वो हमारे बॉर्डर पे एग्जिस्ट करते हैं, बॉर्डर पे लोकेट करते हैं, इसमें हम वो देखेंगे। ब्राउन एरिया ये आप जो देख सकते हैं इस मैप के अंदर, दिस ब्राउन एरिया रिप्रेजेंट्स माउंटेन्स, ठीक है, और दिस डॉटेड एरिया रिप्रेजेंट्स डेजर्ट। दिस इज़ ईस्टर्न बॉर्डर, दिस इज़ ईस्टर्न बॉर्डर एंड दिस इज़ वेस्टर्न बॉर्डर, this is northern border, clear, and Arabian Sea is to the south of Pakistan. तो आप देख सकते हैं कि जो ये आप ये देखें, ये पंजाब है, ठीक है, ये वाला एरिया सिंध का है, ये बलूचिस्तान है और ये KPK है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जो सिंध का जो बॉर्डर इंडिया के साथ ज्वाइन होता है, शेयर होता है, वो ज़्यादा हिस्सा उसका डेजर्ट पे है। डेजर्ट जो है वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसका, और ये थोड़ा कुछ हिस्सा जो है वो प्लेन्स का है, जो पंजाब प्लेन्स इंडिया के साथ शेयर होते हैं। और वेस्ट वाली साइड पे माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स यहाँ पर लेस हाई हैं, वेस्टर्न एरिया में लेस हाई हैं, लेकिन जैसे जैसे हम वी मूव टूवर्ड्स नॉर्थ ये इनकी हाइट जो है वो बढ़ती जाती है। इन द एक्सट्रीम नॉर्थ वी हैव हिमालय, और उससे आगे उससे थोड़ा पीछे हम कराकोरम माउंटेन्स हैं और वो बहुत हाई माउंटेन्स हैं। ये वाइट कलर विच यू कैन सी इन द मैप, white color shows represents snowy peaks of high mountains. Let's see its question answers. Question number 1 is, which landform covers most of the western border? Western border आप देख चुके हैं कि वेस्ट की साइड पे ज़्यादा माउंटेन्स हैं। Question number 2, why are the northern mountains colored white in the map? यस, नॉर्दर्न माउंटेन्स वाइट क्यों है मैप के अंदर? वाइट कलर रिप्रेजेंट्स स्नोई पीक्स ऑफ हाई माउंटेन्स,
Clear? Question number 3. Which landform is located along the eastern border of Sindh? सिंध के ईस्ट वाली साइड का जो बॉर्डर है दैट वी शेयर विद इंडिया, उस साइड पे कौन सा लैंडफॉर्म है? ठीक है, आई हैव हाईलाइटेड इट, इट इज़ डेजर्ट. ठीक है, तो डेजर्ट इज़ लोकेटेड अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ सिंध. These are answers of the questions about each map. You can use these answers, but आपने इनको as it is follow नहीं करना. Just try yourself to answer the questions. If you have any complication or any problem, then you can consult the answer key. Okay, and that's all for today. Thanks a lot.